Hello students, good morning. In previous class we have studied up to the 7th question of exercise 2.1. Today we will learn the question number 8 or we will solve the question number 8. Question is Michael finished coloring a picture in 7 upon 12 hour. There is any picture that is colored by the Michael and the time taken by the Michael is 7 upon 12 hours. Means कोई पिक्चर है जिसे माइकल 7 upon 12 आवर में कलर करता है. वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3 upon 4 आवर. और उसी सेम पिक को वैभव 3 upon 4 आवर में कलर करता है. हु देन द क्वेश्चन इज हु वर्क लॉन्गर. we have to tell who had done the work at the more time. मीन्स हमें ये बताना है कि किसने ज़्यादा टाइम तक वर्क किया. बाई व्हाट फ्रैक्शन एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज इन इट बाई व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर. और हमें वो फ्रैक्शन भी बतानी है, यानी हमें वो टाइम ही बताना है कि कितना ज़्यादा उसका टाइम था. नाउ वी विल अगेन रीड द क्वेश्चन इन अ शॉर्ट. माइकल जो है किसी पिक को 7 upon 12 आवर में कलर करता है और उसी सेम पिक को वैभव 3 upon 4 आवर में कलर करता है. तो हमें ये बताना है कि किसने ज़्यादा टाइम तक काम किया और कितना ज़्यादा टाइम उसने लिया. नाउ सी द सॉल्यूशन. फर्स्ट वी विल राइट दैट टाइम टेकन बाय द माइकल. सो यू नो दैट टाइम टेकन by the Michael is 7 upon 12 hour. And then we will write the time of Vaibhav. Vaibhav finished coloring the same picture in 3 upon 4 hour. Means time taken by Vaibhav is 3 upon 4 hour. So now we have to check that who worked longer. So for it, first we will have to convert our fraction into like fraction. क्योंकि जब तक हमारी फ्रैक्शन लाइक नहीं होगी तब तक हमें क्लियर नहीं कर सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है. और उसी ने ज़्यादा टाइम लिया होगा जिसकी फ्रैक्शन ग्रेटर रही होगी. तो फॉर चेकिंग द which fraction is longer, which fraction is greater, first we will have to convert these two fractions into like fraction. So that's why we are going to convert these fraction into like fraction. So by converting these fractions into like fraction, so our fraction is 7 upon 12, that is the time taken by the Michael, and 3 upon 4, that is the time taken by the Vaibhav. Now to convert into like fraction, we will find the LCM of denominators. So its denominator is 12 and its denominator is 4. So now we will find the LCM. So you can see that LCM of 12 and 4 is the 12. और एक बात हमें पहले से ही पता है, अगर हमारे पास कोई 2 नंबर्स है जिनमें से ग्रेटर नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर से अगर डिविजिबल है तो हमेशा एलसीएम जो है वो ग्रेटर नंबर ही होती है. तो हम बिना एलसीएम निकाले भी बता सकते थे कि इसका एलसीएम कितना होगा 12. क्यों? क्योंकि 12 जो है वो 4 से क्या है, डिविजिबल है. 4 3 जा 12, तो 12 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम. और आप देख भी सकते हैं कि हमने एलसीएम निकाला कितना है 12. नाउ अब हम क्या करेंगे कि इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं. नाउ वी विल डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन. Its denominator is 12, so when we will divide it 12 by 12, then the quotient will be the 1. So now we will multiply by the 1 in numerator and denominator. So 7 into 1 and 12 into 1. Same as we will divide by the 4. So you can see that when we will divide by the 4 to the 12, then our quotient will be the 3. Now we will multiply by 3 numerator and denominator. You know that already how have to convert into like fraction. So 3 into 3 and 4 into 3. Now 7 ones are 7 and the 12 ones are 12. 3 3 is 9 and 4 3 is 12. Now you can see that our both fractions 7 upon 12 and 9 upon 12 has been converted into a like fraction. So you can see that 9 upon 12 is greater. Why? Because its numerator is greater. We know that if fractions are like, so whose numerator is greater, that fraction will be the greater. So 9 upon 12 is the greater. So now consider it.
7 upon 12 was the fraction of Michael, and 9 upon 12 is the fraction of the Vaibhav. 9 upon 12 means 3 upon 4. You can see that I have converted 3 upon 4 as a 9 upon 12. So from here we can write that 7 upon 12 is smaller than the 3 upon 4. So whose fraction is smaller? Fraction of Michael is smaller and fraction of Vaibhav is greater. So means that the time taken by the Vaibhav is greater. So that's why we will write that hence Vaibhav worked longer. Now for the second question we have to tell the fraction also. So we will find its difference. So you know that 9 upon 12 is greater. So from it we will subtract the 7 upon 12. That is the fraction of Michael. 9 upon 12 minus 7 upon 12, that is equal to 2 upon 12. When we will convert into a lowest form, 2 1s are 2 and 2 6s are 12. So we will write the 1 upon 6. So now in a last we can write that as an answer. Vaibhav worked longer time by 1 upon 6 hour. That is the answer.